Hello, welcome, namaskar, adab. मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा and today we are here for an amazing masterclass called Kebab Lajawab with US Poultry. I firstly want to thank our sponsors USAPEEC, which is the United States of America Poultry Egg Export Council, and the United Soybean Board. Thank you so much for making this masterclass happen. Because of you, all our students will get enriched today with some amazing knowledge. Thank you so much for making this happen. We're going to talk a lot about kebab, their histories, and how we can use amazing birds to make kebabs. हम सब जानते हैं कि कबाब में चिकन सब लोग यूज करते हैं, राइट? चिकन और अंडे का भी कबाब बन जाता है. बट think about it, that duck and turkey are two birds which we have not used so much in making kebabs. Today, we're going to go back in history and bring out some excerpts of how these birds were previously eaten. We're going to make two beautiful kebabs out of it. But before that, let's talk a little about all the products which come from the US Poultry. Well, US Poultry gives us an amazing variety of products which includes duck, chicken, turkey, and also eggs. Well, we all know that these are amazing birds to cook with, but what is so special about them? US Poultry is required to go through very stringent poultry inspection guidelines set by the USDA, which is the United States Department of Agriculture, that's called the USDA, and FSIS. Now, these produce are brought into our country absolutely safe, so we can enjoy not just their flavors but their nutritional benefits, and knowing they're absolutely safe. So they make sure that they don't just taste great, but they are packed with health benefits. I have with me a turkey breast which is deboned. Generally, turkey is a 5 to 6 kg bird. US Poultry also provides that, and that is amazing. You've seen my previous master classes where I've shown you how to debone a turkey as well as a duck. So you could go to the Poultry Dhaba channel and find my masterclass there, where you can actually see the entire deboning process. Because I have a duck breast which is deboned, and I'm going to make the duck anari kebab from the deboned duck breast. With the duck breast, I'm going to make a beautiful duck tikka. Okay, this is going to be an amazing tikka, very flavorful. It's actually called as duck anari kebab. So we're going to be doing an anari marination to it. Amazing, beautiful kebab. So guys, let's begin cooking. I'm going to start by first marinating the duck breast in the first marination. Whenever we are handling any poultry, any meat, make sure that you're wearing gloves to avoid cross-contamination. Well, first of all, let's talk about this duck breast. It's actually a beautiful piece of meat because it has a layer of fat on it. ये fat का जो layer है ना, it actually helps it to cook beautifully and very juicy. Although it's in the range of a poultry, but actually it looks like almost a red meat. So when you cook this, it's beautifully eaten, medium done. When you cut it open, it actually looks like almost that you're cutting a beef steak open. It's juicy pink inside and a little crusty outside. This duck's skin, because it has a lot of fat, it actually lends itself to give a very crispy skin, which is very desirable. Totally up to you. If you want to use it, use it. If you don't want to use it, don't use it. Just like the chicken fillet, there's also a duck fillet. You can use this for mince or for making sautés. Now, for this duck anari kebab, what we're going to do is, we're going to do two cooking processes. The first process is to cook it very gently on a pan, and then when it's almost 30 to 40% done, bring it out, remarinate it, and finish it on a sigdi or a barbecue. So before all of that, we have to marinate this. So before the first marination, what I'm going to do is just make very slight gashes onto the skin. Make sure your knife is very sharp. I don't want to go right through. I want to make sure that I cut through the skin but don't go through the flesh. It's very important, otherwise your kebab is not going to give you the cuts that you want. Also, we are going to cut tikkas out of it later. So I don't want to do the gashes very closely. So I want to make sure that I leave enough space in between, so when we have pan seared it, we can actually cut this into small cubes and then cook it on the barbecue. We will repeat the same process behind, just so that the marination gets right through. So make sure you don't go deep inside, just gash it so that it's
able to get all the beautiful marination that we're going to soak it in. All right, this is just going to be my test piece, so I'm marinating this along. I am marinating this in some juices. Now, duck anari kebab. Let's talk a little about the history of this duck anari kebab. Duck primarily was used by the kings and queens, the Rajwadas, right? So they used to hunt a lot of game meat and they used to use. So any kind of game meat was given to barbecues or to big pot roasts, and that's how they enjoyed their game meats. But this particular kebab is actually a historical kebab, because in Rajasthan, in the season where anar or pomegranate was really in, they use this marination, this chatpata marination, because duck is a very gamey flavor. Now I have improvised this recipe from what it was and made it my own. So just follow this recipe. It has got a lot of history behind it as a recipe, but the ingredients I have kind of revolved and changed it. So I am using about 1/4 cup of pomegranate juice in the marination, and I'll use the rest of it to make a glaze out of it. Along with it, I'm adding about 3 spoons of ginger juice. Now the very fact is that the duck meat is beautiful, it's amazing, right? We want to see the texture of the kebab, of the meat piece. So we don't want to overload it with too many spices and too many pastes. So that's why I'm using the extract or the juice. So this is about 3 spoons of ginger juice. Ginger is also used to kind of marinate, because it actually helps in maceration or what you call tenderizing. So ginger helps in tenderizing the meat. So ginger juice, pomegranate juice, and I have another kind of juice, onion juice. How do you make onion juice? Well, you take one onion, you put some water, mixie, blend, fine paste, and then strain out the entire thing. So I'm going to put about 4 to 5 spoons of onion juice. This is going to give it a very sharp flavor. Then comes the salt, which is obvious. Some roasted cumin powder, because this flavor of this roasted cumin is going to be amazing in this. Duck and cinnamon, great friends. So about 1/4 teaspoon of cinnamon powder. About a teaspoon of degi mirch powder. And about 3 spoons of lemon juice. I'm going to add some punch in this now. We've added 1 chili. Now the second chili is green chili paste. And the third chili is yellow chili powder. So yellow chili powder is actually quite spicy. इसको थोड़ा आराम से इस्तेमाल यूज़ करना चाहिए, because sometimes it can make it very strong. So make sure that the chilies that you are using, you taste them little bit so that you know how much pungent they are. हर chili अलग अलग होती है. You might think कि नहीं मिर्ची नहीं है, but बहुत spicy हो सकता है, right? So now this entire marinade has to be kept for almost 2 hours. Every kebab that you make, you have to make sure that it is kept for 2 hours. But since we are doing a master class and I know that we don't have 2 hours, so I will have to use my pre-marinated breast in a while. So मेरे पास pre-marinated duck ready है, जो 2 से 2.5 घंटे हमने इसे marination में रखा हुआ है, and this is how it looks after about 2 hours. The meat becomes a little more darker. Okay. Now इसके बाद इस पे अब 2 प्रोसेस होंगे. पहला प्रोसेस ये है कि इसे हल्का सा एक और लाइट मैरिनेट लगा के आई एम गोइंग टू पैन सीयर इट, देन कट इट, देन रोल इट इन अनदर मैरिनेशन, एंड देन फाइनली कुक इट इन अ स्क्यूअर. देखिए डक के अनारी टिक्के बन रहे हैं. अभी तक इसमें अनार का जूस अंदर गया है. अनार का एक और जूस हमें रिड्यूस करना है. आई हैव विद मी सम पोमेग्रेनेट जूस, जिसे मैंने उबालने चढ़ाया था, और इसे मैं रिड्यूस करूंगा टिल द टाइम इट्स लाइक अ सिरप कंसिस्टेंसी. तो अभी ये सिरप कंसिस्टेंसी नहीं हुआ है, तो इसे सिरप कंसिस्टेंसी होने देते हैं. तब तक दूसरा स्टेप जो हमारा है डक ब्रेस्ट को पकाने का, उसे शुरू करते हैं. यहाँ पर मैं डालूंगा थोड़ा सा ऑयल, अ बिट ऑफ रेड चिली पाउडर, अ टच ऑफ हल्दी पाउडर, एंड अ लिटिल गरम मसाला पाउडर.
along with a little salt. मेक श्योर कि पोमोग्रेनेट का जो जूस है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस जल्दी हो जाता है और एकदम थिक नहीं होना चाहिए, सिरपी कंसिस्टेंसी में रहना चाहिए. If you notice, every time I'm handling raw poultry, I am using gloves. That's very, very, very important. So just make sure कि ये जितना भी मैरिनेट इसमें था अच्छी तरह से उसे वो सोक इन करे. एक्स्ट्रा मैरिनेट को आप इस तरह से स्क्वीज़ कर लीजिए एंड देन पुट दिस हियर. इससे इसमें एक बहुत ही अच्छा कलर आएगा और जब हम इसे सीयर करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगा. व्हाट इज सीयरिंग? कुकिंग ऑन अ हॉट पैन. डक ब्रेस्ट के ऊपर काफ़ी फैट होता है, सो ऑब्वियसली दैट इज गोना हेल्प इट टू रेंडर, विच मीन्स उसी फैट में वो कुक होगा. इनफैक्ट आप डक फैट को रेंडर करके रख सकते हैं एंड इट इज़ यूज फॉर फ्लेवरिंग मेनी अदर डिशेस. So you can use in flavoring your rice, breakfast, beans, lot of things you can use it for. Look at this, beautiful. That's it. इसीलिए मैंने इसको पहले से थोड़ा रिड्यूस करने चढ़ा दिया था साइड में और यहाँ पर अमेजिंग कुछ नहीं डाला इसके अंदर, सिर्फ एक रेड चिली या ग्रीन चिली डाल के छोड़ दीजिए ताकि थोड़ा सा स्पाइक इसमें आ जाए. और इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं डाला. वी गोइंग टू मेक द सेकेंड मैरिनेट इन दिस. नाउ द स्किन साइड ऑफ द डक ब्रेस्ट goes right sizzling on a hot pan. इसे दबा के रखेंगे बिकॉज आई वॉन्ट द एंटायर डक ब्रेस्ट का जो स्किन है टू बिकम नाइस एंड क्रिस्पी. सो जनरली क्या होता है कि फैटी चीज़ अगर आप तवे पे हॉट तवे पे डालते हैं तो वो कर्ल हो जाती है. सो वी डोंट वांट दिस टू गेट कर्ल, वी डोंट वांट दिस टू बिकम नाइस एंड क्रिस्पी ऑल ओवर. अब आप देख रहे हैं कि हमने हार्डली एक छोटा चम्मच इसमें ऑयल डाला था. नाउ दिस डक फैट विच इज कमिंग आउट, you can use it for making gravies as well. Very flavorful. Look at that. So I am not cooking this duck breast completely here. यहाँ पर ये 30 to 40% कुक होगी. उसके बाद we're going to just rest it, then cut it, then re-marinate it, and then finally finish it on the सिगड़ी. अब इसी बोल में next level of marination बनेगा. I am using a large spoon of malt vinegar or apple cider vinegar. साथ में आएगा ज़ीरा पाउडर 1 बड़ा चम्मच, गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच, पोमोग्रेनेट सीड पाउडर यानी कि अनारदाने का पाउडर करीबन 2 चम्मच, 1 स्पून ऑफ हनी. बाद में चेक करते हैं कि अगर हमें स्वीटनेस ज़्यादा चाहिए तो वी कैन ऑल्सो ऐड अ लिटिल मोर हनी. अगेन इट शुड बी खट्टा, मीठा, तीखा, बट आई हैव स्वीटनेस विच इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम दिस एज वेल. सो अ लिटिल बिट ऑफ दिस सिरप. लुक एट दिस कंसिस्टेंसी. इट्स लाइक अ सिरपी कंसिस्टेंसी. अ गुड शेफ मस्ट ऑलवेज टेस्ट. Got a nice punch. I just need a little more chaat masala into it. Now this becomes my anari glaze. I can add a little bit more anar juice here. I'm going to use some of it in the plating and some of it here. The beauty of this dish is the way it is cooked. Gas off. अब सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं when they cook duck breast like this, then they want to hurry up and cut it open. Never. You have to rest this
for a good 5 to 10 minutes because all the pan juices, all the juices inside must kind of be soaked in. So this amazing juicy breast of duck goes right into this marinade bag again. This is my trial piece. It's traveling along. Now this will rest. There will be some adan pradan of flavors. Some of these flavors will go inside, some of the duck juices will come outside, and this will remain like this for a good 15 minutes. Okay. Now, while this is resting, I'm going to make the salad and then I'm going to get the sigdi and then we'll finish this kebab because this is almost done. And I know you guys are drooling and I want to present both these dishes in front of you very quickly. So let's make the salad first. सबसे पहले we're going to get the orange segments out. So very simple तरीका. Let it sit down आराम से. Okay. Just like you're sitting down आराम से and watching me. Then with a small knife just go like this in one go. Try and get all the white part out so that the skin is gone and the flesh is visible. Okay. अगर थोड़ा बहुत white part रह जाता है तो उसको हम ऐसे निकाल भी सकते हैं. God is amazing. You know, He's made everything so beautifully. So I already have these stripes here. I'm going to just do this. One straight cut and one teda cut. Gives me an amazing orange wedge. So similarly, go with all these markings. Get nice orange wedges out without seed, without any problem. Duck and orange go really well. That's why I am getting these wedges out because I'm going to use them for my salad. Okay, this can be juiced और juice enjoy कर लो. मैं जो salad बना रहा हूँ उसमें orange wedges हैं, साथ में onions हैं, tomatoes हैं, spring onions हैं. So onion के मुझे ऐसे long juliennes चाहिए. सिमिलरली टोमेटो की मुझे सीडलेस जुलियंस चाहिए. सो आई एम यूजिंग अ टोमेटो नाइफ विच इज सेरेटेड. Just cut juliennes out of it. I think I'll prefer a larger knife. Onions, some tomatoes, some beautiful spring onion green ke juliennes and some spring onion white ke juliennes. All of this. Just mixing them together. I'm going to add the orange juliennes and the chaat masala towards the end. नहीं तो पानी छोड़ देगा. So this is again beautiful खट्टा मीठा तीखा. Now I'm ready to cook this in a sigdi, but before that I need to cut this into tikke. है ना जी? So get the marinade out completely and let's just cut into almost this kind of pieces. So if you see, the duck breast is cooked only from outside. The rest of it is going to get cooked now on the skewer. Now these are too big to be cooked, so I'm going to cut them into half. Looks beautiful, isn't it? The reason why I'm not putting any kind of yogurt into it, because yogurt will take away the beauty of the duck. So there is enough sourness. Let's re-marinate this so that जो अंदर का cut वाला portion है उसमें भी marination अच्छी तरह से लग जाए. And I'm going to keep using this as a glaze.
Here I come with a beautiful burning hot coal sigdi, and now gloves again. टिक्कों को अच्छी तरीके से स्क्यूअर कर लिया जाए सो दैट फैट, स्किन, सारी चीज़ें गेट लोडेड. Make sure you have enough marinade going because that's the flavor. Start from low heat. Always on a barbecue, start from low heat, go to a high heat. बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ये मैरिनेड इसके ऊपर हमें डालते रहना है. दिस विल वर्क लाइक बेस्टिंग एज वेल एज ग्लेज. मुझे स्किन एकदम क्रिस्पी दिख रही है, बिल्कुल बढ़िया से. Now this is done. I'm going to get the barbecue out because it's very smoky right now here, and we're going to start plating. Beautiful duck tikka is ready. Duck अनारी कबाब. देखिए ये पकाने के बाद भी अभी जैसे ये जूसेस ड्रिप कर रहे हैं, इनको ड्रिप करने दीजिए. यही जूसेस को हम वापस से ऊपर ड्रिजल कर देंगे. बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू रेस्ट द मीट. अब फाइनली ये जो हमने सैलड बनाया था इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ज़ीरे का पाउडर. अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये पोमेग्रेनेट जूस का रिडक्शन और हल्की सी हमारी ये चाट वाली ड्रेसिंग. जस्ट ब्रिंग दिस ऑल टुगेदर. Now bring the tikkas out of the skewers. Some orange wedges as an accompaniment. Never waste these pan juices, they are precious. A little bit of chaat masala on top again. And the duck anari tikka is ready. Amazing. It's amazing. Trust me guys, this is a new innovation of what used to be the past of the duck anari kebab. We've taken this to a new level and I want you guys to start thinking very broadly, very differently now. चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे
टर्की के कबाब बनाने से, जिसका नाम है टर्की के परचे। वेल, टर्की के परचे जो है वो एक्चुअली मुर्ग के परचे की डिश से मैंने उसको चेंज किया है टर्की में, क्योंकि सिमिलर टेक्सचर हो सकता है मीट का, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस कटेंगे। सो वो एक ट्रिक है जो आपको सीखना है। अगर आपको डीबोन करना सीखना है, सो यू कैन लुक एट द लिंक बिलो वेयर इन माय प्रीवियस मास्टर क्लासेस आई हैव शोन यू हाउ टू डीबोन अ टर्की ब्रेस्ट। दिस इज a full beautiful turkey breast. This is how big it is. It's almost bigger than the size of my palm. I'm not going to use the skin of it, so we're going to remove the skin and then we will start making very thin slices of it. Okay, so apart from it, I also have another breast, but we're going to use not the entire thing. So first, let's make sure that we have cleaned the turkey breast fully. So all these extra fat pieces must go off. Now, very sharp knife is a requirement for this dish, because without that you will not get the really thin slices. So you can start from either the thinner side. So one thing what you have to make sure is that you have to cut it along the grains. You can see some grains running around here, these white lines. You have to actually go with it. So it has to be like this. So it will be very difficult to cut it like this. So what we're going to do is cut it like this. So just keep your knife almost at the same level and just slice it. As thin as you can get is what we have to take out the slices of the turkey. This is going to go into another process. We're going to make it even thinner, but यहाँ से शुरुआत. Now, if there is too much moisture on the chopping board, then the turkey or duck or any poultry that you're doing will keep slipping. So make sure that you keep wiping the extra moisture off, and then hands like this, knife at the same level, and just go with thin slices. The trick is that your knife should not go on an angle, and that's how you can actually make it evenly thin. अगर आपकी knife टेढ़ी मेढ़ी हुई ये करते हुए, or if you take a jerk, that's when your parche will become a little weird and haphazard. So you have to just keep going straight from wherever you are. Now, especially coming to this portion, this is a sinew which actually holds the breast together with the bone. Now, this is never going to cook and make it juicy, so I am going to cut it off. All this meat that I am getting, I can use it for a mince, and I can also make a roulade out of it. So now I am going to cut through the sinew. That's one. So now what we need to do is use this guy. This is a order wooden hammer, right? But this is actually for gushtaba or pounding meat. But I'm going to use this and not a meat mallet, because I need a smooth texture, right? So just very little. Now the moment I go, see, it's gone, it's destroyed. So you have to go very, very aram se, okay? This is destroyed, so we are not going to use it. Now let's start processing the parche. Just very gentle, even can go like this. You could also use a plastic bag on top of it so that it becomes even, but just very lightly. Now is the time to become very gentle with the turkey. So just make sure that it doesn't disintegrate, it becomes nice and thin, and start lining it on a plate. We will repeat the same action for all the pieces so that they become even and thin. There is another process in Italian cooking. This is also called as a piccata. Okay, so a piccata basically means a thin slice of meat. So what we are really doing in Hindi is parche, in English it would be a piccata.
right? Keep learning along the way. Now since this is very very thin, what I'm going to do is I'm going to make a marinade here so that we can gholo the marinade, mix the marinade and just smear, apply. You have to be very gentle now. So I'm adding about 2 spoons of lemon juice, 1 spoon of garlic paste. It's not a very harsh marination, so half a spoon of ginger, half a spoon of yellow chili powder, half a spoon of green chili paste, all right, and salt. Now because the color of this final dish is going to be yellowish, that's why I'm not using red chili powder here or any red or any other chili. So I've used pili mirch and I've used green chili. Now just very gently make some space on the plate here. Because it's cut very thin and we have now beaten it, so if you are very not so gentle with it, this is what is going to happen, and this is not what we want from our dish. We want parche like clean, nice, thin sheets. Now we'll just turn them over so that the entire marination is done completely. Alright, so now the step 1 is over. I'm going to quickly clean up my chopping board and come to now marinating this meat. Also this meat has been lying out for some time, so I need to keep this in the fridge. Never leave the meat above 5 degrees or below 60 degrees. That's a danger zone. We must make sure of that every time. Turkey breast first marination done. Now we need to move to the second marination of the turkey. But before that, I just want to talk a little about this bird. This is a beautiful, amazing game bird. Now generally farmed these days, and the farming is very very important because you know what they eat is what the meat will be. So the farming is taken care of, their feed is taken care of, their health is taken care of, and finally that's why you get a beautiful tasty turkey. Now this bird actually is used for whole roasting. So during Christmas or Thanksgiving we do a whole roasted turkey. That's another cooking process. But apart from that, you can also use turkey in many varied forms. So today I'm making a parche out of it. We've done a roulade and you can see the link below as well. So you can do a roulade from turkey breast, you can do a parche, you can just do turkey tikke, lots of turkey tikke, you can make butter chicken from that, amazing. We'll not do all of it together, but I'm just giving you an understanding and a mindset so that you can start thinking about new dishes using US turkey and US poultry. So we will now move to the second marination. For that, I need to do some frying, roasting, but the great accompaniment to a duck that I'm making today is a grape chutney. Okay, so again, grape chutney is not historical. It's a new invention which is mine. I think any game meat goes really well with either orange or any grape. It has to be a little citrus, a little sweet. So I'm making a lovely grape. So I'm making a lovely grape chutney, and I've got 2 kinds of grapes here. One, I have pureed some grapes, and one I have just cut them. So I'm going to start with no oil, absolutely no oil, but a little bit of sauf. You know, sauf is such a beautiful flavor. You can use it in so many varieties. Achar, it lends itself beautifully. It's coolant, it's beautiful, it's summery. So, and again, turkey fennel go really well. So I'm adding fennel को हल्का सा roast करना है, just kind of so that it starts giving out a beautiful flavor. And since grape is a mellow flavor, we're not going to add too many things to it. You could either use aniseed or star anise or even sauf, or maybe if you want to spike it up a little bit, add a bit of peppercorn, but just a few, right? But I'm going to give it a little bit of sharpness. तो ये सौंफ को थोड़ी देर भूनना है और इसके बाद इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें डाल देनी है. थोड़ा पंच के लिए आई एम गोइंग टू बी एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ द ड्राइड रेड चिली. थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे ताकि उसकी स्पाइसीनेस ग्रेप्स के साथ मिक्स हो जाए. खट्टापन के लिए आई एम एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ विनेगर. ग्रेप्स में स्वीटनेस है पर खट्टा मीठा तीखा तीनों आने के लिए थोड़ा सा शुगर एज वेल. अब इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करना है. यहाँ पर विनेगर, सौंफ, थोड़ी सी काली मिर्च एंड लाल मिर्च डाली है. यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ ग्रेप्स का प्यूरे और साथ में ये छोटे छोटे काटे हुए ब्लैक ग्रेप्स.
हम ग्रीन ग्रेप्स की चटनी बना सकते हैं पर उसका कलर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। सो नाउ वी जस्ट नीड टू लेट इट कुक। इसको करते हैं साइड, इसको करते हैं साइड और इसे अब हल्की आंच पे वी विल जस्ट लेट इट कुक with the addition of a little salt. हल्का सा रेड चिली का पाउडर for that extra punch. Now let it just cook. दूसरी तरफ हम बनाएंगे परचे का मसाला। अब ये मसाले में इलायची का स्वाद काफ़ी ज़्यादा होता है और दोनों टाइप की इलायची जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 6 से 7 छोटी इलायची ली हैं, उसमें हम लेंगे 3 से 4 बड़ी इलायची, अबाउट 6 to 8 क्लव्स यानी कि लवंग, थोड़ा सा सिनेमन, अ लिटिल बिट ऑफ पेपरकॉर्न एंड अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ शाही जीरा। इन सारी चीज़ों को हल्का सा लाइटली रोस्ट करके वी हैव टू मेक अ फाइन पाउडर और ये परचे के लिए इस्तेमाल होगा। ब्यूटीफुल अरोमा, इलायची का स्वाद जो है इसे पूरी तरह से मज़ेदार कर देगा। एक्चुअल परचे की रेसिपी में सैंडलवुड पाउडर भी जाता है पर क्योंकि सैंडलवुड पाउडर जनरली अवेलेबल नहीं होता सो यू कैन अवॉइड इट। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा जावित्री इलायची का पाउडर भी डालेंगे और दिस विल बी रियली रियली फ्लेवरफुल। चलिए अब इसको अच्छे से ग्राइंड करके फाइन पाउडर बनाना है। अब उसी सेम पैन में जो कि अभी फ़िलहाल गर्म है, हम सैफरन को हल्का सा गर्म कर लेंगे बिकॉज सैफरन को हमें क्रश करना है और ऐसे रूम टेम्परेचर पे सैफरन क्रश नहीं होता। सो इट हैज़ टू बी अ लिटिल वार्म सो इट बिकम्स क्रिस्प एंड उसका फिर पाउडर बना लिया जाएगा। साथ में ग्रेप चटनी बढ़िया से पक रही है, मज़ेदार हो जाएगी बिल्कुल। परचों के साथ बहुत मज़ा आने वाला है। ग्रेप्स को पूरी तरह से कुक करना है ताकि वो ऑलमोस्ट मैशी हो जाएं एंड दिस लिक्विड इज़ गोइंग टू हेल्प इट टू बिकम मोर लाइक अ कंपोस्ट। सैफरन को जितना अच्छे से ड्राई करेंगे उतना ज़्यादा कम मेहनत करनी पड़ेगी इसे क्रश करने में, उतना ज़्यादा फ्लेवर और कलर निकल के आएगा। द मिस्टेक पीपल डू इज़ सैफरन को हल्का सा ये करके पानी डाल के छोड़ देते हैं, उसमें सैफरन का पूरा स्वाद कभी नहीं आ पाता। सो यू हैव टू ऑलवेज क्रश इट। अगर आप डेजर्ट्स लिए यूज़ कर रहे हैं और आपको होल स्ट्रैंड चाहिए तो पुट इट इन वार्म मिल्क। ज़्यादा हीट में अगर आप इसको कर देंगे तो जो बढ़िया खुशबू है वो निकल जाएगी। When you're cooking, you have to cook smart. So I am still going to keep this pan because इसमें एक और काम होने वाला है. But let's first get the saffron powder. You see how beautifully this has become a beautiful, nice powder. It was effortless. इसको साइड रखेंगे। अब परचे को थोड़ा सा रिचनेस देने के लिए मैं बनाऊंगा थोड़े से काजू और मखानों की पेस्ट, जिसे मैं ब्राउन अनियन पेस्ट के साथ पीसूंगा। इट विल बिकम अ ब्यूटिफुल वेरी रिच फ्लेवर। सो अबाउट 2 स्पून्स ऑफ घी, उसमें हमें मखानों को अच्छी तरह से टोस्ट करना है। So a handful of makhana and a handful of cashews. इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है till golden brown. Once they start changing their color, इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा पानी and we'll make it a beautiful nice paste. मखानों को टोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो पेस्ट कभी बनेंगे नहीं, वो चिपके चिपके रह जाएंगे। ये जैसी ब्राउन होंगे इसको थोड़ी सी ब्राउन अनियन पेस्ट के साथ पीस लिया जाएगा बिकॉज अदरवाइज दे विल नॉट बिकम अ स्मूथ प्यूरे। सो ये जो पाउडर है, परचे का मसाला है, ये तैयार है और यहाँ पर कैन यू हियर, ये क्रिस्प हो गए हैं भूनने के बाद। अब इनका पेस्ट बनाया जाएगा इन अ स्मॉल मिक्सर ग्राइंडर along with 1 spoon of onion paste एंड थोड़ा सा पानी, अबाउट 2 स्पून्स। चलिए इसका भी पेस्ट बना लेते हैं। देन वी आर रेडी टू मैरिनेट द टर्की एंड कुक इट। नाउ दिस ब्यूटिफुल पेस्ट इज ऑल्सो रेडी, नाइस एंड क्रीमी। इसको करते हैं साइड। यहां पर ग्रेप्स की चटनी
थोड़ी सी अभी गाढ़ी हो गई है और ग्रेप्स पूरी तरह से मैशी नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा पानी डाला जाएगा इसके अंदर, जस्ट टू मेक श्योर दैट इट्स अ चटनी कंसिस्टेंसी. आई वॉन्ट द ग्रेप्स टू बी अ लिटिल चंकी, बट कुक हो जाने चाहिए पूरी तरीके से. मेरा एक बहुत ही फेवरेट एक्रोनिम बन चुका है जिसका नाम है KMT. KMT मीन्स खट्टा मीठा तीखा. जहां पर भी खट्टा मीठा तीखा आता है ना, मजा आ जाता है. सो दिस इज वॉट दिस चटनी इज गोइंग टू गिव टू दिस डिश. चलिए अब आखिरी पड़ाव, विच इज वी हैव टू मेक द मैरिनेशन. सो एक बड़ा चम्मच तेल, उसमें मैं डालूंगा हाफ अ टी स्पून ऑफ हल्दी. नाउ दिस kebab is beautiful yellow in color. Saffron is going to give that color but a little bit of flavor as well. So यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी इसे एकदम अमेजिंग कलर देगी. अब इसे मैं वार्म ऑयल में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि हल्दी अपना पूरा कलर निकाले. जैसे ही थोड़ा सा ये वार्म हो जाए, इसे निकाल लिया जाएगा एक बोल में. एंड इन दिस आई एम गोना ऐड द हंग कर्ड. साथ में डालूंगा मैं ये रिचनेस के लिए पेस्ट, करीबन 2 चम्मच. अ बिट ऑफ सॉल्ट टर्की में हमने पहले डाला हुआ है. एंड नाउ दिस परचे का मसाला जिस अबाउट 1 टीस्पून. नाउ गिव इट अ नाइस मिक्स. अब समय है इसमें सैफरन की रंगत डालने का. खुशबू और रंगत दोनों बहुत ही अमेजिंग होने वाली है. नाउ मिक्स इन द सैफरन, योगर्ट, हल्दी. लुक एट दिस अमेजिंग ब्यूटिफुल ब्राइट येलो कलर. एकदम सूरजमुखी वाला कलर लग रहा है ये. रिचनेस ऑफ द काजू, मखाना, अनियन. ये मसाला आई थिंक थोड़ा सा और जा सकता है, परचे का मसाला, अबाउट अनदर स्पून. साथ में मैं इसमें खुशबू डालूंगा केवड़े जल की, फ्यू ड्रॉप्स. साथ में इसके अंदर है सैफरन. लुक्स अमेजिंग. एंड अ गुड शेफ ऑलवेज टेस्ट्स. Amazing. All the notes of cardamom, cloves, pepper, सारी चीज़ें अलग अलग, you can actually taste it. The kevda is bringing everything together. There is yellow chili powder there, but I need a little bit more sharpness here. So I am adding about half a teaspoon of yellow chili powder more. Now is the time to go with the turkey. Now is the time कि ये टर्की के जो परचे हैं इन्हें हम अच्छे से मैरिनेशन में डाल दें. बट उससे पहले wear your gloves and get the extra moisture off the परचे. Now very gently just bring all of this together. बहुत जेंटली. आपने अभी तक जेंटलनेस दिखाई है इसके साथ, तभी ये इंटैक्ट हैं. सो जस्ट बी वेरी जेंटल स्टिल. अब इसकी कुकिंग भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं. वन विच इज़ रिटन इन योर रेसिपी दैट वी विल कुक इट इन दम 50% एंड देन कुक इट ऑन अ सिगड़ी 50%. और यू कैन डस्ट दिस विद रोस्टेड चना पाउडर एंड कुक इट डायरेक्टली ऑन अ पैन. दोनों हो सकते हैं. सो लेट्स डू द डस्टिंग बिट टुडे. सो लेट्स मेक दिस अ पैन फ्राई कबाब. ऑलराइट. अमेजिंग 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 फ्लेवर. लेट्स गेट कुकिंग. In another plate, roasted chana powder. Now using a tong, or you can wear your gloves back again and do it with your hands. Just dust it lightly. And we're going to cook this parche in some ghee.
So in a pan, some ghee. This has to be cooked on absolutely low flame. अच्छे से इसे दोनों तरफ रोस्टेड चना पाउडर से कोट किया जाए एंड देन हल्की आंच पे पकाया जाए। ध्यान रखें कि इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए, शुड नॉट बी लाइक डार्क ब्राउन, गोल्डन ब्राउन इसे हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि सारे के सारे फ्लेवर्स इंटैक्ट रहें, बिकॉज इसमें बहुत सारे डेलिकेट फ्लेवर्स हैं। वंस इट्स नाइसली गोल्डन ब्राउन, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, बाकी पर्चों को भी पका लेते हैं बिकॉज आई नीड अबाउट 4 to 5 pieces for presentation. So like I'm using this turkey breast for making Indian kebabs like this. Similarly like I said, आप इसके टिक्के बना सकते हो, आप इसका मलाई टिक्का बना सकते हो, लाल टिक्का बना सकते हो, अचारी टिक्का बना सकते हो, because it's a breast, it cooks quite faster than the leg. But marination अच्छे से अगर होगा तो अंदर तक जाएगा, because turkey meat is big, it's giant, you know, it's quite dense. So the marination has to go right in. That's why we need good marination time for turkey. दोनों साइड से बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये पर्चे। थिन पिकाटा स्लाइसेस ऑफ टर्की ब्रेस्ट मैरिनेटेड ब्यूटिफुली। नाउ इज द टाइम टू फिनिश आवर चटनी एंड डू द प्लेटिंग फॉर दिस डिश। तो चटनी जो है वो बढ़िया से इकट्ठी हो चुकी है, इसमें साथ में हल्का सा सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। Now, if you realize what I've done here is I've made a saunt ki chutney, but no imli, no dates, no gur, it's only grapes. So grapes के साथ saunt chutney हमने बना दी। Given you another idea कि आप चाट में इसे use कर सकते हैं। Plating techniques, we going to use very international plating techniques whilst we are doing a very Indian dish. So a bit of compote on 5 sides. The liquid now, since it's quite a royal dish, it deserves definitely a royal treatment. So चांदी का work राइट ऑन टॉप। थोड़ा सा गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ जस्ट फॉर गार्निश। दिस इज डेफिनेटली एडिबल। एंड लुक एट दैट, ऑलमोस्ट लाइक अ बुक, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड, पर्चे, layers, fine layers of turkey breast, beautifully marinated. It's a kebab, but it looks almost like a dessert, you know, almost like a plated dessert. Doesn't it look beautiful? I mean, I'm so delighted that I can now cook amazing Indian kebabs with US poultry. Think different, think out of the box. Now with US poultry, I have cooked an amazing turkey ke parche and a duck anari kebab. These are two very innovative dishes, yet have got a beautiful history behind them. How you can create, how you can implement is totally up to you. It's your creativity versus your brain. So here you go guys, this is turkey ke parche and this is duck anari kebab ready for you. Now I want you to go cook them, enjoy them,
and spread the word, as US poultry is amazing because it's not just tasty, it's healthy, it's very nutritious. Duck, turkey, make them a part of your cuisine, a part of your home, a part of your restaurant.